Hi, and welcome to yet another episode of the Skeptic Show. For this episode, I had the pleasure of talking to Kushal Mehra. Kushal Mehra is the host of the Carvaka Podcast, and the Carvaka Podcast is one of the most popular podcasts in India for conversations surrounding politics, philosophy, religion, and social issues. His podcasts have been viewed over millions and millions of times. In this episode, Kushal talked about the existence and the rise of right wing in India. He talked about why we need reservation and why India is not a secular country and why she should be. He talked about media neutrality. He talked about problems of free speech in India. He talked about India becoming Vishwa Guru and how do we make sense of all this political noise. I had a lot of fun talking to him and I hope that you will enjoy this conversation. And if you do, then please don't forget to like, comment, and share this podcast with everyone. And also, don't forget to follow us on Spotify and subscribe on YouTube. And also, subscribe to the Charvak Podcast on YouTube and follow him on Spotify. Alright, the episode with Kushal Mehra begins in 3, 2, 1, 0. Namaste, Kushal. Welcome to the Skeptic Show. Namaste. Thanks a lot for having me over. Yeah, I wanted to begin this discussion by talking about the terms that are used in the Indian political discourse. The term right wing is thrown a lot, but I have read the manifesto of BJP, and they are not right wing, at least not to me. Their policy are similar to the left party, and they are more left leaning than the left party in the United States. So, is there a right wing in India? Does India has a right wing? No, in the classical sense, India does not have the right wing. If you are looking at it from the understanding of Western paradigms, which is more the right wing in America tends to be on the economic issues, very much pro market economics and leans very much towards a small government thing. In India, it's not the case. India is a welfare state. India has always been very left-leaning in its overall understanding, and welfareism is very much not that America does not have a welfare state, but in India the welfare state is far more pervasive. And not only that, the interference of the government in the life of an average individual, and if you were to compare it in terms of how much it interferes in the life of an average American, then how much it interferes in the life of an average Indian, you will find a huge difference. So in that sense, India is not really having any right-wing party in India. What India has, in my view, is parties that are nativist and parties that are not nativist. Now, somebody might say, so are you trying to say that Congress is not nativist? Yes, I'm actually literally saying that Congress does not fundamentally believe in the nativist concerns of India. And Congress has always believed in a certain worldview, which Congress used to call Nehruvian secularism or cosmopolitanism, but in my opinion, it was the most non-cosmopolitan view in the world, because if you're a cosmopolitan, you will reduce each and every person down to the individual unit. That's what classical liberal cosmopolitanism is, that it treats everybody as an individual, and then the state lets you be. But Indian Nehruvian cosmopolitanism, if I use the word, was designing everyone into groups, and then it is just groups jostling with each other. So I don't think so India ever has a right wing, and the BJP and the Hindutva movement is a response to that kind of cosmopolitanism in its all kind of identitarian politics. Now, whether it's good or bad is not the debate, but what it is that even the BJP is not really individualistic in that sense. They're also identitarian, but they are an identitarian of a different sort. So in India, in that sense, there is no real political outfit that could be classically termed as right wing or libertarian, or there is no political party that goes on the podium and tells the crowd that हम आपकी जिंदगी से निकलने के लिए आए हैं. कोई नहीं बोलता, सब आपकी जिंदगी में घुसने के लिए आए हैं. There is no political outfit in India that says, okay, I want to get out of your life. They all want to get into your life. They want to interfere in your life. They want to tell you what you want to do, what you should do. It's a nanny state mindset. And we saw that at its charam seema, whether it's BJP or non-BJP ruled states across India. Yeah. I mean, in the COVID guidelines, that was, nanny state ultra pro max. That was nanny state on steroids. But okay, it's so I don't think so India has right wing. India has different shades of left wing, where you go from the hardcore Marxists
to the center left paradigm. And India did not open its market because it was the right thing to do. India opened its market because it had no choice really. Yeah. And that's very typical Indian. हमारे पास कोई option ही नहीं थी, तो चलो खोल दो, अभी तो कुछ करना पड़ेगा. And then, oh my God, these lead to good things. So let's keep this for now. But yeah, India is not right wing. राइट. सो सभी चीज का एक कॉज होता है. तो बीजेपी के राइज का या फिर हिंदुत्व मूवमेंट के राइज का कॉज क्या है? व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू द राइज ऑफ बीजेपी स्लैश नॉन लेफ्ट पार्टी? But I think it's very clear. The cause lies in the worldview of the Congress. Look, you cannot live in a country which has, given birth to 4 major religions of the world. Jainism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism are 4 major religions of the world. And then you create a polity that at a fundamental level goes about denying their existence, challenging them, and till the extent that sometimes making laws that are clearly against them, like rules in India which say Hindu temples need to be under government control. Yeah. Now mosques are not under government control, gurdwaras are for that matter not under government, but unique Indian state. Then there are things like the Hindu code bill being, which I have, by the way, that is one of the things that I support, that Nehru ne apni zindagi mein ek acha kaam kiya, wo Hindu code bill laya. But the point is, it should not have been the Hindu code bill. It should have been the uniform civil code. It should have been the code bill for every Indian, right? So these small things add up when you are living in a state that actively gets to you and tries to reform you, but it leaves everybody else alone. See, in India, the war was never economic. The rise of Hindutva as an ideology was against Islamic fascism or Islamofascism or Islamism and Western imperialism, which was also laced with a touch of Christianity, whether it's Protestant or Catholic, it does not matter. The proselytization angle of it. So Hindutva was at a socio-cultural level a response to that, and at a political level, it was also a response to one more factor, which was the deeply casteist tendencies of Indian society. This is a fault of Hindus inside. So Hindutva does not fight a 2-pronged war. Hindutva fights a 3-pronged war. It fights a war against Islamism, fights a war against Western imperialism, and it fights a war against casteism, which people don't want to talk about. So Hindutva was a natural outcome of the flaws of Indian society, where there was an active elite class. I mean, it is no surprise. Nehru hated Hinduism. You should just read Nehru, you will understand. So a man who hated Hinduism, and imagine you're the majority in the country and your founding prime minister really hates you. So it doesn't augur well for a country. And now, I'm a disbeliever. I may not agree with a lot of Hindu claims, but the point is that you can't live in a country where you keep hating the majority faith so openly and then expect them not to push back. It's not going to happen. And then to add to that, the caste problem in India, which is vehement. Obviously, it has reduced significantly in the last 75 years. But the point is, it still exists, and it was a lot more then, which is what led to, thinkers like Savarkar or Hegdewar and multiple other thinkers who basically saw the faults in Hindu society and they started dealing with it. And when the culmination of all of that happens, there is a societal vote bank that is created, and all you needed was a political outfit to come in and just jump on top of the bandwagon and say, okay, I'm with these guys, and there you have BJP now. That's all it is. BJP identified the forces that were forming in the market, and BJP worked hard at it. RSS worked really hard at it, and the dilution of the caste factors, albeit I think it in a scale of 1 to 10, the dilution of the caste factors is not even till 5, in my opinion. We have not even reached halfway. We need to go a lot. But what the BJP did is it realized the caste realities, and it changed its identity from what is classically called the Brahman Baniya party to an SC, ST, OBC and nationalist Brahmin Baniya party. That's what it did. And that's why BJP is successful. So I think this is the reason BJP has risen. There was an active anti-Hindu. And I mean, Congress should accept they are anti-Hindu. I don't know why they deny it. Because their actions are very clearly anti-Hindu. And it's fine. I'm not saying you can't be anti-Hindu. Free speech hai. Jo karna karo. Yeah, but can you give some example? Well, Congress said
if we come back to power, the Mahila Morcha chief of the Congress said, हम ट्रिपल तलाक बिल को खारिज करके वापस ट्रिपल तलाक लगाएंगे. Oh my God. So they said that. Congress has said we will never bring uniform civil code because I don't know why. Apparently, they like 8 crore Muslim women to suffer and a few lakh or crore Christian women. By the way, you should check the divorce laws of Christians. They're fantastic. The worst divorce laws in India right now are not Muslim divorce laws. They are Christian divorce laws. Nobody talks about it. Nobody talks about it. Congress has made the biggest blunder. I don't know how many people, I don't know, you must be too young to remember. There was something called the Communal Violence Bill that was proposed by the Congress in the NDA 2, I think, times. No, sorry, UPA 2 के टाइम पे एक कम्युनल वायलेंस बिल आया था, विच वाज, मतलब उन्होंने सिर्फ इतना नहीं लिखा था कि है हिंदू को जेल में डालना चाहिए, सिर्फ अगर उतना लिख देते थे तो ऑब्वियस हो जाता था, बट इट वाज क्वाइट क्लियर व्हाट द बिल वाज. एंड यू नो देयर हैज बीन अ हिस्ट्री. शाबानो, राइट? शाबानो का केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है. सुप्रीम कोर्ट कहती है शाबानो डिजर्व्स मेंटेनेंस. कांग्रेस गोज आउट ऑफ द वे टू गेट अ बिल पास्ड that supersedes the Supreme Court judgment. These are all anti-Hindu acts because Congress, why are these anti? You like, they did not want to interfere in Muslim ideas. No, because the same Congress in the 1950s rammed through the Hindu code bill. So you cannot say they are not anti-Hindu, because if they are not anti-Hindu, they would have not done that to the Hindus too. But they want to ram every single reform. I may agree with those reforms, but the point is they do ram through things when it comes to the Hindus, but they don't do it to other communities, which makes them quintessentially anti-Hindu. That is my problem. And which is why that, I mean, which, मेरे को कई बार मेरे को हंसी आती है. मैं मेरे लिबरल दोस्त जो वेस्ट में उनसे बात करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तो तुम्हारे हिसाब से अलग सिविल लॉज होने चाहिए क्या हर के? तो बोलते हैं तो पागल है क्या? दैट्स सच एन एंटी लिबरल सेंस. लाइक इंडिया के लिबरल तो यही बोलते हैं. इंडिया के लिबरल्स कैटेगोरिकली बोलते हैं कि सबके अलग अलग कोड्स होने चाहिए. And they're like, no, that's not possible. Then I share with them, news reports of their sources. And that's what it is. So Indian liberalism or Indian progressivism has been basically anti-majoritarianism, which is fine because I do believe majoritarianism is an issue and it should be taken care of. But the point is, if that becomes your essence, then I'm sorry, the majority will fight back. And the majority has, whether they like it or not. Right, so we call ourselves a secular country, and you were talking about the Catholic law and the Muslim personal law. Are we really a secular country? Because secularism, in a fundamental sense, is the separation of a state and religious institution. But Hindus, Sikh, and Jain, they follow the Hindu law. Muslims have Muslim personal law, and Christians have Catholic law. So, can we really call ourselves a secular nation if there are different laws for people of different faith? No, I don't believe India was ever a secular nation in the classical sense. The classical sense, as you said rightly, was a negation. The state will not look at people as groups. So that group could be homosexuals, that could be trans people, that could be Muslims, that could be Hindus, anything, Shaivites, Vaishnavites. The state, for the state, you are just individuals, right? That's how a secular state would function. India was never a secular state. India's essence has always been about putting group rights over individual rights. That's been India's problem from day one, which is why I say when these people say, oh no, but Indian secularism is positive. What is positive in Indian secularism? What is positive in Indian secularism? What is so positive in the fact that Muslim women have to be going through nikah halala? What is so positive that Muslim men can be allowed to marry 4 women? What is so positive in a Christian woman needing the approval of a padri or something to go through a divorce? What is so positive in this secularism? I don't see. So if being positive means ghettoization, then I don't know. Being positive means letting people rot in hellholes. I don't know. Being positive means accepting female genital mutilation in the Bora community because we don't want to hurt their sentiments. I don't want to be part of this kind of a secular fabric. My secularism is more like the French version or the American version. That's my secularism, where everybody is an individual. If your sentiments are hurt or your religious sentiments are hurt, too bad. I don't care. That's how secularism should be. And secondly, secularism should be about the state not interfering in my life. The Indian state is the complete opposite. It interferes in everything I do. The Indian state sends me to Hajj, sends me to Tirath Yatra, sends me to these places.
इंडियन स्टेट का काम है ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये फंडामेंटल सी, ईदर इंडियंस ऑन एवरेज को सिविक्स पढ़नी नहीं आती है, या हमारे देश में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने एक मस्त निंजा स्कीम निकाली कि ये सालों को फंसा के रख दो, ये लोग हमेशा इसी में मरे पड़े रहेंगे, ये ग्रुप में ही पड़े रहेंगे। इंडिया में लोगों को ये पूछने को भी नहीं आता कि मेरे इंडिविजुअल राइट्स हैं क्या। कोविड में आपके पूरे इंडिविजुअल राइट्स का हनन हो गया और लोगों को पड़ी ही नहीं हुई है, लोग अपने गाने गा रहे हैं। और यहाँ पे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे जब पुलिस लाठी से लोगों को मार रही थी भगाने के लिए। ये इंडिया में ना ऑन एवरेज देखो, मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई आल्सो से इंडिया में सेक्युलरिज्म कभी आ नहीं पाया इज इंडियंस ऑन एवरेज हैव वेरी पुअर राइट्स कॉन्शियसनेस। बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है, आज भी सी वी आर अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी एंड वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, ओवरऑल रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन अ ड्यूटी बेस्ड स्ट्रक्चर, वेदर वी लाइक इट और नॉट। रिलीजन का हमेशा क्या होता है, रिलीजन आपको बोलता है ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। रिलीजन का जब आपके ऊपर असर होता है ना, तो आप हमेशा ऐसे सोचते हो मेरी ड्यूटी क्या है। और वो क्योंकि हम लोग एक डिवाउट और रिलीजियस सोसाइटी, आई गॉट नो इश्यूज, आई एम नॉट एंटी रिलीजन, बट द पॉइंट इज दैट when you have over religiosity in a society, the rights consciousness tends to suffer. And India की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ राइट्स कॉन्शियसनेस एवरेज इंडियन में नहीं है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स कॉन्शियसनेस इज मैं 5 साल में जाऊंगा, किसी को वोट करके आ जाऊंगा, वो उनकी राइट्स कॉन्शियसनेस है। मगर बोलने का अधिकार ये होता है। सेक्युलरिज्म इन रियल सेंस, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, वो ये सब चीजें को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इंडिया में। और उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है, वो शिक्षा पद्धति जो पहले दिन से थी, वो नेहरूवियन इन्फ्लुएंस से थी। और आई एम सॉरी, नेहरू वाज नॉट अ सेक्युलरिस्ट। नेहरू वाज अ ग्रुप थिंकर who imposed his own weird version of groupthink on the entire society that led to tremendous ghettoization of India, till the extent that now to de-ghettoize India, we have such humongous pressure from different groups that even one good move, imagine, like I always use the uniform civil code as an example. Why? Because which sane, liberal, open-minded person will oppose a uniform civil code? But the Indian secular person's argument is they will impose Hindu laws on. Has anybody read the Hindu code bill? What is so Hindu about the Hindu code bill? The Hindu code bill has nothing Hindu in it, because all the rights of inheritance or etc., which could have been taken from the Smriti texts, right? Yeah. Were all changed and removed over a period of time. For example, inheritance laws in India are completely changed now. But if you try to trace them back into the Smriti text, you will not find those laws there. Which means the Hindu code bill did secularize itself. So to say that you will impose the Hindu code bill on anyone, well, yeah, because it's secular. So we're supposed to do that. Right. So do you think that the Indian model of secularism is the byproduct of pluralism that we have that exists in this country for thousands of years? No, I don't think so. I don't think the Indian model of secularism is a byproduct of Indian pluralism. The Indian model of secularism is a byproduct of this absurd left-wing progressive ideology that Nehru was married to. And then you can call the closest to it will be the 70s ideology that came from Canada. I think it was ये जो current पप्पू है Canada का, उसके पिताजी ने लाई थी, Jean-Pierre Trudeau ने लाई थी शायद, I could be wrong. It is multiculturalism. There is nothing plural in Indian secularism. Indian society is pluralistic. That is because of the Indian ethos, which has been for years of coexistence. Indian secularism, see, ghettoization is not coexistence. Please let us not mix ghettoization with coexistence. Yeah. लोग एक दूसरे के पास में रहते हैं क्योंकि उनको झेलना पड़ रहा है, is not a steady state. Yeah. यहाँ पे हमारी हालत यह है कि हम एक दूसरे को झेल रहे हैं. हाँ, और अभी भी तो वो मोहल्ले एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के लोग रहते हैं. गांव में अभी भी वैसा होता है. तो वो किसको चाहिए? इसीलिए तो आप अगर सोचो, इंडिया में अर्बनाइजेशन ने कास्ट को खत्म किया.
इंडिया में अर्बनाइजेशन ही कास्ट को खत्म कर रहा है, मगर इंडिया में रिलीजियस कोमिंगलिंग अभी भी स्लोली हो रही है. क्यों? क्योंकि अर्बन गेटोस हैं, रिलीजियस गेटोस हैं, मानो या ना मानो है. जिसको एक्सेप्ट नहीं करना है ना करे, मगर रियलिटी है. मुंबई में रहो, आपको मुस्लिम एरियाज मालूम हो सकते हैं. आपको मालूम है ये एरिया में मुस्लिम रहता है, ये एरिया में हिंदू रहता है, ये एरिया में मुस्लिम रहता है, यहाँ पे हिंदू रहता है. इवन कास्ट गेटोस है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ अर्बन एरियाज में. यस, देयर आर दलित गेटोस इन मुंबई. We all know that. But the point is, the answer to getting rid of the ghettoization mindset is urbanization. And India, unfortunately, I don't believe Indian secularism is pluralistic. I think Indian secularism is a very top-down, authoritarian groupthink mindset, which is not pluralistic, because pluralism stems from the Indian Hindu ethos. Now, what was the Indian Hindu ethos, right? I have narrated this story so many times on my podcast too, of the Valmiki Ramayana. Yeah, the tiger and the bear. Yeah. So उसमें end में क्या होता है? उसमें end में it is a message of individualism. So pluralism while you maintain your individualistic identity. इंडिया में तो है ही नहीं वो. इंडिया में इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी को कैसे खत्म किया जाए आपकी, उसके ऊपर सुबह से शाम तक पूरा प्रोसेस में एफर्ट किया जाता है by the government, by your religious leaders. And this has always been the problem. And then there is another wing in India that says, if you try to be individualistic or talk about reform inside the Hindu fold, they will say you are Protestant. अरे बाबा, तो फिर भक्ति मूवमेंट क्या थी? फिर भक्ति मूवमेंट क्या थी? भक्ति मूवमेंट was also trying to reform Hindu society, ना, कि वो क्या करना चाह रहे थे. So to say reform is a Western construct itself is hilarious. That means whatever you don't like, you give it to the West. Rationality is a Western construct. So I think Indian thinking is muddled on average. Indians on average have lack of conceptual clarity. And I say this with full responsibility. I don't want to put Indians down, but I have seen and interacted with a lot of Indians now. They tend to have a very obscure mindset and very weird thought process when it comes to these things. The only thing Indians have clarity on is they are internally very nice, peace-loving, plural people. And that has nothing to do with their schools. It has everything to do with their religion. Because their religion by default taught them to be like that. Yes, their religion had bhayankar casteism. I am never going to deny that. But the point is, the religion also taught them many good things. And they have imbibed those good and bad both. So what happens is, while they are imbibing the bad, they have imbibed the good things also. So that good things is saving India. Baki, the Indian state is trying its best to screw India. So do you think that we need to adopt the French model of secularism? I would say the American model is better. But yes, the French model also makes sense. Now, because the French model is very harsh. Like in the French model, there will be no pagdi also inside your school. Let me just put it clearly. French model mein pag bhi nahi hoegi. While I may not personally be opposed to that, but I know India may, that's a bridge too far. But the American model of secularism would be something that I would go with. And the American model is also far more fiercely individualistic than the French model, by the way. Far more fiercely individualistic. So America is actually a unique case where now they are also under wokeism, going into group identity a lot more. I don't know why they are so obsessed with it, but it's a phase America is going through. But the point is, I think if India needs to survive as a society, it has to be secular, because we are too diverse. And if the Indian state does not stop itself from interfering in identitarian things and does not impose for once a uniform civil code that will lead us to think like individuals and then get the hell out of our lives, I think we are in for a lot of trouble, because the Indian state is fundamentally confused about what its role in society should be. And we've been grappling with it for the last 75 years. And if in 75 years we can't figure out what is the role of the state, then I don't know what we are going to do. So do you think that we can progress and we can become a Vishwa Guru with all the group identity-based law? No. Will we progress? If your question was that, yes, we will, because that's just the nature of the beast, right? We are a poor country which is becoming less and less and less poor because of economic growth and because of multiple global capitalistic things, and even India adopting free market policies. Will we become Vishwa Guru? रहने दो यार, पहले तो अभी आज से 10 साल पहले तो लोग आधी इंडिया तो रास्ते में टट्टी कर रही थी, तो पहले वो तो सुधार ले. विश्व गुरु तो बाद में बनेंगे. आप मेरे को एक बात बताओ ना, इन द लास्ट 100 years, फॉरगेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इवन इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, हम आज भी जो हमारी पुरानी फिलॉसफी है वो पेल रहे हैं.
हम कोई नए फिलोसफी के पेपर, और अभी लोग बोलते हैं नहीं अरबिंदो ने लिखा है, और अब लिटरली अगर गिनती कर सकते हो ना कि जिदु कृष्णमूर्ति ने ये लिखा, श्री अरबिंदो ने ये लिखा, स्वामी विवेकानंद ने लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये लिखा, सिर्फ 5-6, उसके बाद काउंटिंग खत्म। रमन महर्षि ने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, मगर पॉइंट है कि देयर इज नो रियल इनसाइट इवन इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी जो हमने लाई है। और ये बोल सकता है आदमी कि भाई भूखा है तो कहां से करेगा। पॉइंट ये है कि ठीक है, तो मगर कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना भूख सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात हो गई। इंडिया अगर अगले 50 साल में अपने आप को संभाल ले, जो संभाल लेगा मेरे हिसाब से, आई एम नॉट नेगेटिव अबाउट दैट, तब उसके बाद बात करें हम विश्व गुरु होने की, तो समझ पड़ता है। और बाकी ये सब बातें होती हैं, सी पीपल लाइक टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी पॉजिटिव बिकॉज यू कांट लिव योर लाइफ बीइंग अ नेगेटिव पर्सन। अगर हर चीज में नेगेटिविटी देखते रहोगे तो जिंदा कैसे रहोगे, तो वो बात होती है। मगर while we need to be positive and while we need, I am very positive about India in general. On average, I think India is going to progress. The rate might change if BJP comes in power or Congress comes in power, but Indian progress is going to happen. But what I am not very positive about is India's role in the larger game of international foreign politics or stuff like that. I believe India at best will be a relevant player. I'm not saying India को कोई भी उड़ा के चल जाएगा, ऐसा नहीं होएगा. India will be strong enough, but to say that to become a thought leader like America, where America को जुकाम हो जाता है तो पूरे दुनिया को बुखार हो जाता है, kind of a level, आप उसको विश्व गुरु बोलोगे, वो नहीं इंडिया होगा. वो इंडिया को होने को कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से तो 50 साल के ऊपर लग जाएंगे कि इंडिया इतना सीरियस प्लेयर होगा. तो ये विश्व गुरु वाली बातें अभी करके कोई मतलब भी नहीं है. पहले अपने आप को इस पोजीशन पे लाओ कि हमारी एवरेज इनकम $20,000 हो, बराबर $20,000 होगी ना, तो मेरी बात एक पक्का समझ लेना. अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कितना पैसा मैटर करता है. चाइना में NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, राइट? So outside of America, China is their biggest market. LeBron James Black Lives Matter करेगा, उइगर मुस्लिम्स के बारे में कभी बात नहीं करेगा. ह्यूस्टन रॉकेट्स के ओनर ने गलती से बात कर ली थी. He spoke against the Chinese human right violations. China overnight removed every single Houston Rockets jersey from all their stores, and Houston Rockets had to apologize, right? Now, why am I talking about the Chinese? Is because they have financial might that they're dominating world discourse. Now, I'll give you an example from India. Everybody knows India dominates cricket. Yeah. Everybody knows. Like, if there are 100 rupees of revenue generated in global cricket, 90 rupees of that comes from India. And the results are to be seen. You see how India दुनिया को cricket में at least नचा रहा है. हाँ. Now, if you had a scenario where India reaches what China is today, and maybe around $15,000, $20,000, you will see the change happening. You will see the New York Times not writing the garbage, which is, I think, at times outright lies, just slander, or Washington Post writing. So, तभी आप बोल सकते हो, आप विश्व गुरु तो नहीं बोल सकते हो, मगर तभी आप स्मार्ट एलेक बन गए होगे कि अब तुम मेरे साथ ये कर नहीं सकते हो. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन अबिस्मल. Indians are not trained in different cultures. Indian foreign policy establishment, जैसे क्या होता है कि आप अगर इजराइल या अमेरिका में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, Americans will decide an area chief. That area chief literally knows everything about that area, the cultural nuances, everything. They're trained. इंडिया में क्या होता है, we are a culture of generalists. बाबू आज 2 साल कनाडा में था, उठा के बाबू को रशिया में भेज दिया. ना उसको कनाडा का इतना मालूम है, ना उसको रशिया का इतना मालूम है. अगर आपका कल्चर ऐसा है, आपको लगता है आप विश्व गुरु बनोगे? आप जनरलिस्ट हो. जनरलिस्ट विश्व गुरु नहीं बनता. स्पेशलिस्ट होते हैं जब, तब आप विश्व गुरु बनते हो. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट नीड टू बी चेंजिंग. व्हेन दे विल चेंज, आई डोंट नो. Magar they will change, and they are slowly changing. I see a lot of non-left scholarship coming up now, which, let me tell you, when I was growing up in my early teens and early to late 20s, it was just missing. अभी फिर कोई आके बोल देगा सीताराम गोयल, राम स्वरूप. अरे यार, उन दो के आगे कुछ है क्या? You need to be churning books every single day. Every month there needs to be 3 books coming out from the non-left. But now you have people like Vikram Sampath, Sanjeev Sanyal, and many others, for example, who are writing brilliant books. Now that culture is coming. And that culture is coming now from financial stability. That there are people now who are not part of the humanities clique,
But now these things, these small efforts, when done again and again and again and again over the next 20, 30 years in every single facet of Indian life, then India can be a Vishwa Guru. Because see, the left will never want to be a Vishwa Guru because the left is built on self-hatred, right? So what is a left-wing mindset? Anti-majoritarian and built on self-hatred. They believe in self-flagellating. So वो तो कभी विश्व गुरु बनना ही नहीं चाहेंगे ना, because that would mean being expansionist and being a universalist. But who would want to do that? The non-left would want to become the Vishwa Guru because they are the ones who usually have self-pride, national pride and stuff like that. But the non-left does not believe in scholarship in India. They have just started to realize, scholarship matters. That trolling people on Twitter and shouting at them and thinking, मजा आ गया मैंने उसको गाली दे दी, might only give you 2 seconds की शांति, but you do not get anything out of that. So that's the whole point. Scholarship that leaves a long-lasting imprints, that might help you in becoming a Vishwa Guru of some sorts, nothing else. या आप ये बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की, और राइट विंग में मुझे लगता है, या फिर नॉन लेफ्ट भी बोल लें, उसमें स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा लैक करता है. मैं इंस्टाग्राम पे कभी कोई पोस्ट लाइक कर देता हूँ तो अगले दिन मेरे पे आता है पोस्ट कि पुष्पक विमान एग्जिस्ट करता था. अगले दिन आता है कि ब्रह्मास्त्र हमारा न्यूक्लियर वेपन था और ब्रह्मशिरास्त्र मेरा हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब ब्रह्मशिरास्त्र था. तो ऐसा होता है ना कि I have a line, people with a shitty present can only live in an imaginary past. Yeah. That's the problem with most people who have a shitty present. तो ये हमारी सोसाइटी की भी यही ट्रेजेडी है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो हम हमेशा पास्ट में रह के फील गुड करते रहते हैं. So this is a very natural human tendency. Not that Indians are unique at that. Americans in the 1900s, early 1900s must be the same people. They must be imagining some past. That's how every civilization is built. But the point is, we need to get real. If we really want to be a serious world player, which I don't think so we are. We are not a non-serious world player too, but we are not a serious world player. We are somewhere in between right now. If we want to do that, we need to do much more. So I'll give you again, I'll use Vikram Sampath as an example. Vikram Sampath has written a magnificent magnum opus of, the biography of Veer Savarkar. It's two volumes, around 1200 pages, whatever. Now, if there was real scholarship in the non-left, there would have been at least 500 essays extracting different facets of Savarkar, using those Savarkar arguments and building how Hindutva is Hindu modernity. Very few people did it. Abhinav Prakash did it. I did it. Till some extent, Harsh Madhusudan Gupta did it. Abhijit Iyer did it. But not many people did it. Why? Because there aren't enough people who want to write. That's the problem. So, and the ones who just, like I said, they are satisfied with the Pushpak Viman ideology. Although I don't believe that there is a huge group. They're just very vocal, I believe. But it will happen. I'm very positive. There are good books. Ratan Sharda's book on the RSS, his dissertation on RSS was very interesting, on the resolutions of RSS. And while I might have many disagreements with many ideas of the RSS, especially their economic philosophy, I mean, I just can't understand their economic philosophy. But on the cultural front, it's very interesting what RSS does. Very good work they do. And there are many things that will happen. And people need to realize that Hindutva as a movement is what? Only 100 years approximately. It will take some time. I think 100 years is too little. You wait another 50 years, you'll have so many good things coming out that people will be pleasantly surprised. Yeah, I also want to talk to you about reservation system, because I have heard two loud voices. The first one wants reservation free in India on the ground that talented people are not given the chance. And the second group wants reservation in everything. I saw one tweet and that guy was demanding reservation in Indian cricket team. So what are your thoughts on the idea of reservation and the reservation system? Because I think that these two are two separate things. Well, as far as I'm concerned, my stand on reservation has always been crystal clear. I am an absolute and unequivocal supporter of SC/ST reservations. I have always been, and I will always be. Because if you look at the history of India, yes, there has been a significant number done on SC/STs, whether we like it or not, culturally, societally, and financially, economically. They're just in a very bad space. They need that reservations. Where I become opposed to reservation is the post-Mandal days. Pre-Mandal, I'm in total support. Post-Mandal, where we have done reservations for different categories, that needs more research because the numbers are not very clear there. Also,
If oppressed or being oppressed was the criteria, I don't know how to say it, but I mean, everybody knows politics in India. It's not like the OBCs are not oppressing the SCs, STs. Everybody knows that. I don't need to talk about that. So the point is that reservations are here to stay, whether we like it or not. I am opposed to post-Mandal reservation ideas. I am more of a pre-Mandal guy. As far as how will reservations end or should they end? Well, I don't think so. They will end in any time soon. They will end maybe when India has an average income of $50,000 or something. Then maybe they will end, because then people may not need the benefits of reservation. So आज की डेट में अगर आप reservation नहीं रखोगे तो लोग जाएंगे कहाँ, राइट? वो बात होती है. और आपने पूरा ढांचा. नाउ पीपल ऑल्सो से, आप एक तरफ बोलते हो कि कास्ट और ये सब खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशंस परपेचुएट करते हैं कास्ट को. इन अ वे करते हैं, मगर आप बताओ मेरे को, जिस आदमी को आज भी भारत में, रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश में, एक बेचारे दलित लड़के को घोड़ी पे बैठने को नहीं दे रहे थे शादी के लिए. तो वो आदमी को समाज में घोड़ी में बैठने नहीं देते, उसको काम क्या घंटा मिलेगा? उसको शादी में घोड़ी में बैठने नहीं दिया. आज भी 2022 में हम, तो ये कहना कि हमें रिजर्वेशंस नहीं करनी चाहिए, ये बेवकूफों वाली बात है. यस, जो पोस्ट मंडल कास्ट हैं उनमें जेन्युइन रिसर्च होनी चाहिए, जो इंडिया में हुई नहीं है. इंडिया में कास्ट सेंसस हो ही नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और रिजर्वेशन को ज्यादा टारगेटेड करना चाहिए, ज्यादा एकेडमिक होना चाहिए, उसको मैं सपोर्ट करता हूं. अगर कोई बोलेगा कि अरे 4 जनरेशन हो गए, अभी वो पर्टिकुलर बंदा फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया है, सो डोंट यू थिंक दैट चाइल्ड मे बी आफ्टर 4 generations should not get reservations? That's an argument I'm willing to consider. But my point is that, are you the person opposing reservation? I'm not saying you personally. I'm just saying you, the person who's giving the argument, the imaginary person. Are you willing to consider there is casteism in India? Because you're a caste denialist. You believe there is no such thing as casteism. It is a British construct. यहाँ पे तो सब लोग हाथ पकड़ के गाना गा रहे थे. I'm not going to listen to those people. आज भी बिहार में बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि अगर कोई कोट एंड कोट लोअर कास्ट वाले लोग अगर घर पे आ जाते हैं तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता, साथ में खाना नहीं खाने दिया जाता, और उनके जाने के बाद वो सबको पानी से साफ करते हैं. बाप रे. तो बोलो, ऐसी सिचुएशन में आप बोल दो कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ऐसा सब कहां से होगा? बट ये मेरा एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, शुड समवन पे द प्राइस फॉर द क्राइम्स ऑफ देयर एंसेस्टर? क्योंकि ये लेफ्ट और राइट में दोनों में ये रिलेवेंट है. एक साइड लेफ्ट का हर जगह रिजर्वेशन चाहता है और दूसरी साइड राइट में मुस्लिम हेट्रेड बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके एंसेस्टर ने इन्वेड किया था एंड ऑप्रेस किया था. देखो, सिंपल है. आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी फॉर एनीथिंग दैट्स डन बाय समबडी एल्स इन द पास्ट. आई डोंट इवन से सॉरी फॉर समथिंग माय फादर हैज डन. तो पास्ट में तो बहुत दूर की बात है. मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरे पिताजी ने कुछ किया उसके लिए. तो फादर, मेरी वाइफ ने भी कुछ किया, मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगा. उसके कर्म वो जाने. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो बिलीवर भी नहीं हूं कर्मा में, मैं फिर भी लाइन यूज कर रहा हूं ताकि रिलीजियस लोगों को समझ पड़े. आई डोंट बिलीव इन दैट, बट एट द सेम टाइम आई एम अ फर्म बिलीवर दैट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स नीड टू बी करेक्टेड. Historical wrongs need to be corrected, not because they happened because of me, but because I am a compassionate person. Because I have compassion for that particular group. And which is why I say there needs to be research, and that research needs to categorically prove that these people were historically, these jatis were historically hard done by, which is my point of opposition to the post-Mandal thing. So they are completely compatible, both the positions. I don't need to apologize to any SC/ST person. मैंने कुछ नहीं किया. मैं तो बोलता हूं एनहाइलेट कर दो ये जाति वर्णा के सिस्टम को. मैं तो टोटल एनहाइलेशन जानता हूं. मगर एट द सेम टाइम मैं SC/ST लोगों के लिए रिजर्वेशन आउट ऑफ शेयर कंपैशन चाहता हूं, क्योंकि दे डिजर्व इट, बिकॉज दे आर रियली हार्ड डन बाय. Now somebody might come back, मगर what about that poor Brahmin? Yes, we need to find some way out for them too, and I'm open to that. So मेरा एक फियर है, डू यू थिंक कि अभी जो इंडियन हिस्ट्री के रीराइटिंग के बारे में बात चल रही है वो कहीं ना कहीं पे एंटी मुस्लिम वहां पे बायस आ जाएगा? I don't think so. Depends on anti-Muslim. What do you mean by anti-Muslim? If saying Aurangzeb was a bigot, is that anti-Muslim? No, he if was calling
Ghori and Ghajni mass murderers is being anti-Muslim? I don't think so. If the history textbook says Ghori and Ghajni were mass murderers, and because Ghori and Ghajni were mass murderers, all Muslims today are mass murderers, that is bigotry. Yeah. Why would a history textbook write that? That's stupid. But to say that Ghori and Ghajni did these things, they destroyed these temples, these are the records, is stating history as it happened. I don't think so. There is anything wrong in that. Yeah. आज से 5-6 साल पहले जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम पावर में आई थी, तब से मीडिया के न्यूट्रल होने पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे. मुझे तो ये अब समझ में नहीं आता कि न्यूट्रल कोई हो भी कैसे सकता है. बट क्या आपको लगता है कि हमें न्यूट्रल होना चाहिए, और ये क्या पॉसिबल भी है न्यूट्रल होना, क्योंकि ह्यूमंस के पास तो अपने बाइसेस होते ही हैं. कोई न्यूट्रल नहीं होता. There is no such thing as neutrality. You can be indifferent to things. You can say like right now, I am not commenting on Russia, Ukraine. मुझे कुछ पता ही नहीं है, so I'm indifferent. I feel for the people who are going to lose their lives on both sides. But beyond that, मेरे को कुछ मालूम नहीं है. मैं काय को जाके चौधरी बन के अपने विशेष टिप्पणियां दूं जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है. जब मालूम नहीं होता तो चुप रहना चाहिए. Am I neutral to the subject? No. Neutral means what? What is neutrality? नहीं, मैं एकदम objective हूं. No, you can be objective and biased at the same time. You can be on one side, but you can still give an objective narration of what has happened. I live inside India. I am very openly biased as a voter of BJP, but I criticize BJP time and again. I'm pretty objective when I do that. To say that I don't understand. Everybody has biases, yaar. तुम blank slate थोड़ी ना हो जो पैदा होते हो. You are completely intertwined into the running train that society is. I mean, in fact, that is one of the good philosophies of existentialism. They say you're not born like that, right? You're born in a running train. Society के rules and regulations है जो तुम्हारे ऊपर थोपे जाते हैं. So to say that we constantly try, the thing that we need to scout for, or we need to look at, is the scout mindset. जो जूलिया गलेफ की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बुक की. वो कहती है कि only thing that should matter to you is it true or not. आप अपने बायस को तो निकाल ही नहीं सकते हो. आप सत्य की तरफ जाओ. अगर आपको सच मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला. That's how न्यूट्रलिटी क्या होती है. तो I mean, ये न्यूट्रलिटी का भी आविष्कार हमारे लेफ्ट विंग एक्सपर्ट्स ने किया था, क्योंकि उनको दिखाना था कि हम लोग ट्रूथ बेरर्स हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं, तो हमारे को सुनो. वो न्यूट्रल नहीं है. They also come from a certain bias. There are facts. What your job is to narrate the facts, and then what you derive out of them is your problem. For example, भगवत गीता पढ़ने के बाद आप क्या डिराइव करते हो, वो एक है. भगवत गीता नाथसीस को पढ़ाई गई थी और उन्होंने क्या डिराइव किया वो कभी पढ़ लेना. भगवत गीता थोड़ी ना चेंज हो गई. आपने क्या डिराइव किया वो चेंज कर लिया. द फैक्ट, द मैसेज ऑफ द भगवत गीता रिमेन्ड द सेम, मगर somebody derived something totally different from them. That doesn't make anything Bhagavad Gita bad. But what I'm trying to say is that this whole sham of neutrality that is being sold to so many kids these days. Like, nahi, that journalist is very neutral. How is that journalist neutral? Why is that journalist neutral? Is that journalist the brainless turd? You have to be brainless to be neutral. You can't be neutral. और लोग आते हैं बोलते हैं मैं सेक्युलर ह्यूमन हूं. अबे साले तू सेक्युलर कैसे हो गया? You are a secularist, not secular. हाँ, वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है. सेकुलर. तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम लोगों को न्यूट्रल बनाता है, लोगों को सेक्युलर बनाता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है. So ये सब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है ना. इंडिया, I always say that damn, the internet was the greatest boon for India. कि कम से कम कुछ एवेन्यूज तो खुले. ये इन लोगों का नेटवर्क तो चैलेंज हुआ. ये तो कुछ भी पेलते रहते हैं, ये लोग बकवास करते हैं, पागल लोग. मैं आपसे फ्री स्पीच के बारे में बात करना चाहता हूं. और मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि फ्री स्पीच वो स्पीच है जो किसी को ऑफेंड नहीं करे. हम अपना ओपिनियन रख भी सकते हैं और किसी को ऑफेंड भी नहीं करें. और आज मुझे समझ में आता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था कि मैं सच नहीं बोलता था क्योंकि वो लोगों को ऑफेंड कर देगा. डू यू थिंक कि फ्री स्पीच में राइट टू ऑफेंड इंक्लूडेड होना चाहिए? फ्री स्पीच सिर्फ राइट टू ऑफेंड के लिए होती है और कुछ होती ही नहीं है. क्योंकि अगर आप किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हो तो किसी को आपत्ति नहीं होगी आपकी स्पीच से. फ्री स्पीच बनी ही राइट टू ऑफेंड के लिए है और किसी चीज के लिए फ्री स्पीच नहीं बनी है. आपको बोलने का अधिकार कब चाहिए? जब आपको लोगों को खुश करना है कि लोगों को
उंगली करनी है। आपको उंगली करने के लिए बोलने का अधिकार चाहिए। आपको अगर सबको खुश करना है, कोई कुछ नहीं बोलना है, हाथ बोल भाई, तू बोल। फ्री स्पीच इज फंडामेंटली अबाउट द थिंग्स दैट हर्ट यू। फ्री स्पीच इंडिया में नहीं है। फ्री स्पीच इंडिया में मेरे मरने तक तो नहीं आएगी। मैं 41 साल का हो गया, मुझे तो चांस नहीं लगता आने को, क्योंकि इंडियंस को हर चीज में सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। हाँ। मैंने गलती से पूछ लिया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच क्या होगा, उसकी सीरीज बता दो, शायद उससे भी किसी को हर्ट हो जाएगा कि तू पाकिस्तान को क्यों देख रहा है। बोले अच्छा टेस्ट मैच यार देखना है यार, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, पाकिस्तान जा रही है, इतने साल के बाद देखना है मुझे टेस्ट मैच, क्रिकेट का फैन हूं मैं। तो ये हाल है इंडिया में। मैंने वो इंडिया में फ्री स्पीच नहीं है। मैंने वो पॉइंट आउट किया था, वो पुष्पक विमान वाला, तो मुझे लोग एंटी हिंदू बोल रहे थे। अरे भाई मैंने पढ़ा है, तुमने आज तक वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा, मैंने ले करके वाल्मीकि रामायण पढ़ा है। मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्चर, भले मैं बिलीव नहीं करता कि उसमें जो भी है, बट पोइटिक और स्टोरी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाल्मीकि रामायण। स्पेशली वो पार्ट जब सीता किडनैप हो जाती है एंड देन उसके बाद जो राम का रिएक्शन रहता है। बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। सो डू यू थिंक कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों से लोग बोलते हैं कि फ्री स्पीच नहीं है, मेरी फ्री स्पीच पे अटैक हो रहा है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला है? नहीं, नॉट इन द नियर फ्यूचर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अभी 295A 153A दबा दबा के मिसयूज होगा जब राइट विंग से इंडिया के, तभी ये निकलेगा। अभी कम से कम 10 साल ऐसे ऐसे केस फाइल होंगे, ऐसे ऐसे केस फाइल होंगे, और बाद में लेफ्ट बोलेगा यार फंस गए, अभी चलो ये लॉ निकाल देते तब वो लॉ निकलेंगे इंडिया में। तब तक वो लॉ निकलने नहीं वाले हैं। और इंडिया को याद रखना, इंडिया में जब तक आपके यहाँ बोलने का अधिकार नहीं आएगा, जो कि नहीं है, याद रखना, तब तक इंडिया में इंडिविजुअलिज्म भी नहीं आएगा। आप चैलेंज ही नहीं कर पाते हो ग्रुप ग्रुप बाउंड्रीज के बारे में, आप रिलीजन को क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते हो। इंडिया में हर जगह माई सेंटिमेंट्स आर हर्ट, हर जगह। मैं कहता हूं कि मुनव्वर फारूकी, मैं कोई उसकी कॉमेडी का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, मैंने उसका ज्यादा मटेरियल भी नहीं देखा है, उसने जो भी घटिया बातें कही उसको बोलने का अधिकार है। हाँ। उसको बोलने का अधिकार है। सिमिलरली अगर कोई हिंदू कॉमेडियन इस्लाम के ऊपर जोक्स मारता है या प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जोक्स मारता है, उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि वो आते ही नहीं है। अब कोई आ जाएगा मेरे को बोल देगा प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बोलोगे तो उसको मार डालेंगे, कमलेश तिवारी। पॉइंट ये है कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है, और अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर 50 करोड़ ने बोल दिया तो क्या 50 करोड़ के गले कट जाएंगे? क्या बेवकूफ हो गए हो क्या? एक आधा बोलता है इसके लिए, जब बोलने का अधिकार होगा तो बहुत सारे बोलेंगे। जब बहुत सारे बोलेंगे ना, लोगों को आदत लग जाती है। इंडिया में भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्योंकि कानून का डर है ना, लोगों को बोलने को नहीं होता है। जब वो कानून का डर हट जाएगा, यस, चाकू का डर मैं समझता हूं, मगर पॉइंट ये है कि चाकू का डर एक को हो सकता है, 1 करोड़ को नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली बहुत ही गलत बात हुई, वो बेचारा गुजरात में बच्चा जिसने एक वो वीडियो बनाया था, उसकी मृत्यु हो गई, उसका मर्डर हो गया। वो वीडियो, वो बच्चे का मर्डर हो गया। वो बच्चा मरना डिजर्व नहीं करता था, सिर्फ एक वीडियो के लिए। हाँ, क्योंकि उस वीडियो में उसने गलती से प्रॉफिट मोहम्मद की फोटो दिखा दी थी। उसने कुछ गलत बात भी नहीं कही थी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, उसने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। मगर पॉइंट ये है कि वो बच्चा तो, उसकी बेचारी की तो डेथ हो गई, पर पॉइंट है कि वो वीडियो इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, ट्विटर पे वायरल हुआ, फेसबुक पे वायरल हुआ, व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, जो बाकियों ने शेयर किया, तो वीडियो तो गया ना। तो इसको स्ट्राइसेंड इफेक्ट बोलते हैं ना, जो बारबरा स्ट्राइसेंड ने बोला था मेरे घर को तुमको नहीं दिखाने दूंगी फोटोज। तो क्योंकि उसने ये केस डाला वो पत्रकार के ऊपर, तो दुनिया को हो गया अच्छा ये क्या है, जरा जाके देखे, और सारी दुनिया ने उसका घर देख लिया। तो ये होता है कि जब आप, यस वो बच्चा मरा, मगर पॉइंट ये है कि वो वीडियो नहीं मरा। वो वीडियो गया, वो हर कोने में गया, हर घर में गया, जो नहीं देखने वाला था उसने भी देख लिया। तो ये जो उसके मर्डरर्स थे, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। मे बी उसके मर्डरर्स ने अगर उसको नहीं मारा होता था तो शायद ये वीडियो इतना पॉपुलर भी नहीं होता, मगर अब वो वीडियो पॉपुलर हो गया। मैं वो लड़के का अनफॉर्चुनेटली नाम भूल गया, वो गुजरात के लड़के का, और बहुत गलत है। और इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हाँ। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर क्या है? पुलिस टू सिटीजन रेशियो क्या है? इंडिया में जजेस क्या है? 3 करोड़ केस पेंडिंग है, और जज बैठ के हमारे को, जजेस को कंसर्न है कि अजीत भारती क्या कर रहा है, अजीत भारती हमारा मजाक क्यों उड़ा रहा है, अबे अपने केस सॉल्व कर लो, अजीत भारती के पीछे पड़े हुए। ये प्रॉब्लम है इंडिया की। इंडिया में अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी हैव आवर प्रायोरिटीज कंप्लीटली आउट ऑफ वैक। हमारी प्रायोरिटीज सॉर्टेड नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज जहां होनी चाहिए हम वो करते नहीं है, जहां नहीं होनी चाहिए हम वहां सब कुछ करते हैं। ये प्रॉब्लम है इंडिया की।
but ठीक है, we will come out of this too, and this is a growing phase, and I think next 20-30 years में will be a far better place. पर इंडिया के लेफ्ट और राइट विंग दोनों का तो यहीं पे एग्रीमेंट है कि फ्री स्पीच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मेरे भगवान के बारे में बोलता है तो एक जगह पीट दिया जाएगा, दूसरी जगह मार दिया जाएगा ना। इंडिया का लेफ्ट बोलता है हिंदुइज्म के बारे में बोलना चाहिए, इंडिया का राइट बोलता है इस्लाम के बारे में बोलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उनकी एग्रीमेंट है ऑन सिलेक्टिव फ्री स्पीच। लेफ्ट थोड़ी ना बोलता है कि हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेफ्ट कहाँ बोलता है? लेफ्ट तो बोलता है जी खोल के क्रिटिसाइज करो हिंदुइज्म को। राइट बोलता है इस्लाम को करो, हिंदुइज्म को मत करो। देयर एग्रीमेंट इज ऑन द सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फ्री स्पीच। ओके। आप खुद को चार्वाक बोलते हैं, तो चार्वाक का यहाँ पे मतलब क्या है? क्योंकि इंडिया में अभी भी जो भी हिंदूज के माइंडसेट में यही है कि हमारी जो फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, वो सिर्फ थीइस्ट वाली है, सिर्फ पूजा पाठ वाली है। तो आप चार्वाक के बारे में थोड़ा उनको बता दो ताकि उनका थोड़ा दिमाग खुले। देखो, चार्वाक दर्शन जो है वो वैसे, उसकी अगर डेट के बारे में बहुत डिबेट है कि चार्वाक दर्शन की डेट कब हुई थी, कब नहीं हुई थी। अब जैसे बृहस्पति के जो थे सूत्र, ठीक है, बृहस्पति सूत्र थे, तो वो सबसे पहले बोले जाते हैं चार्वाक के, मगर बृहस्पति के सूत्र तो है ही नहीं। तो अभी आपको सबसे पहला जो मेंशन है चार्वाक का वो आता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, जहां पे क्लियरली चार्वाक को एज एन मटीरियलिस्ट दिखाया जाता है। द यूजेज ऑफ द वर्ड चार्वाक और लोथ का एथिकस उस मतलब बाकी भी है, मतलब मुझे याद, रामायण में भी एक जगह मेंशन होता है, फिर महाभारत में शायद रामायण में जबाली ऋषि, जबाली का वो एपिसोड है, मगर वो भी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चार्वाक नहीं है, मगर काइंड ऑफ है। फिर महाभारत में आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत मेंशन है चार्वाक का, शांति पर्व में था शायद, चैप्टर 211 में। फिर बृहदारण्यक के उपनिषद में थोड़ी एक लाइन जो झलक दिखाती है स्केप्टिसिज्म की। फिर वो छांदोग्य उपनिषद में जो उद्दालक का है उसमें है। मगर अगर रियल सेंस में बोले तो फर्स्ट मटीरियलिस्ट फिलोसोफर इंडिया में अगर आप बोलोगे, प्रोटो मटीरियलिज्म जिसको बोल सकते हैं, वो अजीत केसम्बकली था, जिसका थोड़ा बहुत डिटेल में आया है। तो अगर डेट पूछेंगे तो 600 to 400 BC। अभी मजा देखो, सबसे ज्यादा तुम अगर एथीस की डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे आप तो बोलेंगे एपिक्यूरियंस वर द फर्स्ट एथियस्ट, है ना? हाँ। जबकि एपिक्यूरस की डेट क्या थी? 340 या 320 समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है उनकी। उनसे कम से कम 300 साल पहले मटीरियलिज्म इंडिया में थ्राइव कर रहा था। इट वाज थ्राइविंग इन इंडिया। फिर भी इंडियन मटीरियलिज्म के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इंडिया में मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी में सिर्फ चार्वाक नहीं थे, अज्ञानवी थे, आजीविकास भी थे। ये 2-3 काइंड ऑफ मटीरियलिस्ट थे। अज्ञानस और आजीविकास के बारे में तो और भी कम पता है। चार्वाक के बारे में फिर भी 50 पेज है। मतलब सर्वदर्शन संग्रह में पहला चैप्टर है, सर्व सिद्धांत में कुछ 15-16 श्लोक हैं, ये आदि शंकर का जो सर्व सिद्धांत संग्रह है। फिर प्रबोध चंद्रोदय है, जो कृष्ण मिश्रा का, क्या नाम है उनका, कृष्ण मिश्रा थे, क्या नाम था यार, मेरे को नाम है एक तो मेरे को याद नहीं रहते। हाँ, कृष्ण मिश्रा थे। फिर ये 3 पुस्तकों में इन्होंने पूर्व पक्ष रखा है चार्वाक का। और फिर एक थी वो, अभी जयरसी भट्ट को भी वो लोग क्लासिकल चार्वाक मटीरियलिस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि जयरसी भट्ट वाज लाइक अ नाइलिस्ट, मगर ठीक है, जयरसी भट्ट का तत्वोपप्लव सिम्हा, ये 4 पुस्तकें मिला लो तो आपको चार्वाक का थॉट मिलेगा। और उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि जयरसी भट्ट ने बाकी दर्शनों का रिफ्यूटेशन किया हुआ है अपनी बुक में, और चार्वाक थॉट को रखा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्यापा है, मतलब समस्या है। मैंने पंजाबी का वर्ड यूज कर दिया, स्यापा। सो प्रॉब्लम यह है कि आपको जो भी चार्वाक दर्शन के बारे में मालूम है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी पर्सन, ये प्रॉब्लम है। तो चार्वाक दर्शन तो है पुराना, अभी मेरे जैसे लोग हैं कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में, पढ़ता हूँ जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ता हूँ, जितने भी प्राइमरी सोर्सेज ढूंढ सकता हूँ पढ़ता हूँ। और चार्वाक का जैसे इंडिया में 5 एलिमेंट्स होते थे ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, आकाश, ईथर। तो चार्वाक कहते थे ईथर में नहीं मान सकते, क्योंकि ईथर को परसीव नहीं किया जा सकता था, तो वो सिर्फ चार एलिमेंट्स में मानते थे। दूसरा 6 प्रमाणों का सिस्टम था। चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते थे, परसेप्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परसेप्शन को। वो बोलते थे सेंसेस जो होती हैं उनका और जो चित्ती है, मनस का इंटरैक्शन होता था, एक्सटर्नल इंटरनल उससे आता था, और वो
इन्फरेंस का भी ऐसा है कि कुछ स्कूल बोलते हैं चार्वाक इन्फरेंस में बिल्कुल नहीं मानते थे, बट कुछ लोग बोलते थे कि इन्फरेंस इज फाउंड ट्रू एज पर द चार्वाक्स अगर वो लोक व्यवहार में यूज किया गया है. सो फॉर एग्जाम्पल, लोक व्यवहार में अगर आप इन्फर कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी होएगा, तो वो चार्वाक उसको एक्सेप्ट करते थे. उसमें भी बहुत डिबेट है, मगर पॉइंट ये है कि 6 प्रमाण की जगह चार्वाक 1 या 1.5 प्रमाण में मानते थे. ये चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी थी. फ्री विल में भी बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे अभी आजीविकास थे, वो फ्री विल में नहीं मानते थे. चार्वाक फ्री विल में मानते थे. फिर चार्वाक रिचुअलिज्म में नहीं मानते थे, वो रीइंकार्नेशन में नहीं मानते थे, वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स में नहीं मानते थे. उनके हिसाब से शरीर ही आत्मन है, और शरीर गया आत्मा गई, खत्म, गेम ओवर. और कॉन्शियसनेस के ऊपर उनका एक्चुअली जो व्यू था इतने साल पुराना था, विच इज वेरी मच इन लाइन विद करंट साइंटिफिक कॉन्शियस व्यू. उनका पॉइंट ये था कि कॉन्शियसनेस एक एपिफेनोमेनन है, कि मतलब इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर, कि हमारा ये मैटर डेवलप हुआ और कॉन्शियसनेस उसका बाय प्रोडक्ट है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने साल पहले लोगों ने ये सोचा था. मगर उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी क्लमजी है. वो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर दैट हैज अराइज आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर एयर फायर. मतलब इट्स काइंड ऑफ क्लमजी, मगर ठीक है, उस टाइम पे ऐसे ही होते थे लोग. बट ये बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट चार्वाक दर्शन है. मैं एक्चुअली एक ऐसे लिखने वाला हूँ चार्वाक दर्शन पे. मैं अभी ऑलरेडी इन द प्रोसेस हूँ, लिख रहा हूँ. तो आई एम नॉट, आई मीन आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, आई हैव टू रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स. तो मैं क्या करूंगा, इसको around 2000 to 3000 words का ऐसे होगा, which will be a basic introduction into the चार्वाक दर्शन, not only to the Indian audiences but to the Western audiences also. उसको थोड़ा समय लगेगा मुझे 1 महीना, मगर वो 1 महीने में आ जाएगा. और मैं आपसे ये सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ. सोशल मीडिया पे अगर कोई अपना ओपिनियन पब्लिश करता है तो या तो उसको लिब्रांडो बोलेंगे या फिर उसको अनभक्त बोलेंगे. तो ये जो लेबलिंग है, हम लोग इतने एग्रेसिव अपने लैंग्वेज में सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं और अपनी रियल लाइफ में तो उतने नहीं होते हैं. बट क्या ये सोशल मीडिया यहाँ पे क्योंकि नॉमिनस हम रहते हैं एक लिमिटेड सेंस में, तो क्या हमारे ये इनर डार्क सेंस सेल्फ को एक्सपोज कर रहा है? इज सोशल मीडिया एक्सपोजिंग आवर इनर डार्क मीन सेल्फ? कुछ नहीं है यार. इट्स वेरी इजी टू हैव to be mean to people when you don't have to be bad. But people in, so I'm trying to understand your question. So is your question that what is the real me, the one me that is rude to people on social media, or the real me that is never rude to people on average when in real life? Is that your question? Yeah. So I think the real you is the person who is in real life. Social media, because you lead that personal contact nahi hai, so it naturally gives you that kind of element. Don't take social media seriously, and don't over opine also on social media. Is maybe that will be my last message to everybody. Don't over opine on social media. When you try to opine on something, try to study it. Ask more questions. See, a curious mind and a well-read mind is the one who asks questions. I mean, I think the culture today on social media incentivizes opining more than questioning. And I know everybody wants to be liked, everybody wants more followers, but I think you should try to avoid the trend. I think you should try to be a seeker. I think you should try to ask more questions. And if the followers come, they come. If they don't come, they don't come. And you should focus on your career more, I think. लोग सोशल मीडिया में ऐसे घूम जाते हैं जैसे पता नहीं उनकी सारी जिंदगी है. I mean, I know people who will be in a party and I'll be like, क्या कर रहा है? बोलते नहीं, मैं व्हाट्सएप पे किसी से झगड़ा कर रहा हूँ. तो मैंने बोला, तो पार्टी में क्यों आया भाई? व्हाट्सएप पे झगड़ा करने के लिए आया क्या? So I think you should have rules like not more than an hour or 2 hours. That's about it. I mean, I like podcasts. Podcasts are the best. You can have these kinds of nice conversations. Yeah. And thanks to the beauty of technology that you don't even need to be in person now, आप कैमरा के द्वारा बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ. तो ये चीजें हैं. आई थिंक सोशल मीडिया को एक टूल के जैसे यूज करो टू प्रोनाउंस, not to engage. And when you engage, try to ask questions. Beyond that, ज़्यादा मत करो. I think social media has its place. Overall, it is a net positive. मेरे जैसे लोगों को आवाज सोशल मीडिया ने दी, आपके जैसे लोगों को आवाज सोशल मीडिया ने दी. Like any other tool, it is a tool. अभी आपको थम्स अप दिया है, आप कितना थम्स अप पीते हो ये आपके ऊपर है. आप वो टूल को मत, आप थम्स अप को दोष मत दो. मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने आप को दोष दो. वो तो आपको बेचेगा ही, वो तो आपको चरसी बनाएगा ही. आपके ऊपर आप वो चरस लेते हो कि नहीं हो ना अंत में. तो मत लो, टाइम फिक्स कर दो, इसके बाद मेरी ऐप ही बंद हो जाएगी, खत्म हो गया. And one last serious question. How do I make sense of all this political noise?
क्योंकि यहाँ पे टाइम्स नाउ एंड रिपब्लिक टीवी राइट विंग ओपिनियन को न्यूज़ की तरह पास कर रही है, फिर स्क्रोल, एनडीटीवी, क्विंट, ये सब लेफ्ट विंग ओपिनियन को न्यूज़ की तरह पास कर रही है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं उसको वेरीफाई करूंगा तो मुझे 2-3 घंटा इधर ही लग जाएगा, और मेरे पास एक करियर भी है। सो हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल नॉइज? Wait for whenever a news breaks, wait for 72 hours. Most of the facts get checked and removed. Then you usually tend to know the true picture after 72 hours or at least a week. So that would be first. Never react instantly on the news. Having said that, I have done it multiple times. But if you ask me, I can only give you the answer of what you're supposed to do, not what I'm doing. Secondly, try to read papers like essays. Try to read books once in a while. And try not to know everything about everything. But what you know, try to know a lot about that particular subject. And you don't need to have a political opinion on everything. Why do I need to know what is the intrinsic politics of falana state in India? अरे बाबा नहीं मालूम है, नहीं जानना है, मुझे मेरा विषय मालूम है. And try to find out people who know more about that subject. And try to read their work. It's very simple. Or listen to their podcast. That's what you should aim to do. You should not try to do that. You have to be a smart researcher. And you gain that skill over a period of time. It's not unassailable. It's very simple. And always try to listen to both sides. Because then you will realize your own blind spots. So if you watch CNN, watch Fox News. You will learn a lot. Because you will see how they present the same event in different ways. You will understand what lens they are using. And then you will realize the human frailties. I realized my frailties when I did all of this. So I think it's not that hard. और बाकी काम करो यार, पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री को जान लिया, मुख्यमंत्री को जान लिया, एमएलए को जान लिया और काउंसलर को जान लिया अपने एरिया के, बहुत हो गया. कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है उसके बियॉन्ड. ऑलराइट, सो इस पॉडकास्ट को अब यहीं पे एंड करते हैं. बट आपके लिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है. क्या आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है? देखो, पढ़ाई करो, पहली बात. खूब पैसा बनाओ. पैसा सबसे आवश्यक चीज है अपनी लाइफ में. मैं हर यंग बच्चे को यही कहता हूं, पहले अपना करियर बनाओ. करियर बनाओगे, बाकी सब अपने आप होता रहेगा. तो पहले अपने आप को सिक्योर करो, क्योंकि इंडिया में सरकार कुछ नहीं करती. सरकार तुम्हारी सिर्फ लेने के लिए बैठी है, तुमसे और तुम्हारी दोनों. तो वो सरकार का काम है. सो फर्स्ट, become financially secure, focus on your career. Do not be apolitical. Have an understanding of politics, but be smart. Be smart when you opine. Also, be very clear in your communication that when you criticize an idea, you are very clear that you are criticizing an idea, not the people associated with that idea. Because people are complex. Ideas are just ideas. Like, you could actually meet a Marxist. Now, I hate Marxism. But am I going to say that each and every Marxist on planet Earth is a bad person? I don't think so. There might be good people, good children, good sons, good daughters, good parents. They could be. They're just attached to that ideology. So we have to realize the complexity of human minds and human beings. And we have to be more compassionate. I'm opposed to Islam, but I would never judge Muslims on the basis of Islam. I'm opposed to many facets of Hinduism, but I would not judge Hindus on the basis of that. So that's the whole thing. Judge people individually, focus on your career, and never get disappointed that अरे बर्बाद हो गए, ये कुछ नहीं है. सब चीजें चलती रहती हैं. Always keep working hard. So that would be my only message. ओके, तो इस एपिसोड के लिए इतना ही. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जा करके चारवाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और डोनेशन भी भेजिए कुशल मेहरा @ICICI पे. Yes, वो सबसे अच्छा काम है. और मैं आपको एक दूसरे पॉडकास्ट के लिए भी इनवाइट करूंगा 2-3 महीने बाद, जब मेरा एग्जाम हो जाएगा. मुझे हिंदुत्व पे आपसे डिस्कस करना है. मेरे पास कुछ क्रिटिसिज्म है इसके लिए. तो चलिए, इस पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मिलेंगे अगली बार. धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. आई विश यू द बेस्ट. थैंक यू.